Good morning, students. In our last lecture, we had seen the last question was there were 18 such mango boxes were there. You can see such mango boxes, isn't it? So, such mango boxes, 18 boxes were there, and in one box there was 12 kg of mangoes. So, which was collected from one tree of mango. So what will be the total weight or the total mangoes collected from one tree? So you remember, you can see here 18 multiplied by 12. So the approximately value, it was 216 kg of mangoes by weight, which we had done in our last lecture. Okay. Now in the second question, if you see, there is a second question in your book, page number 3. They have written that you have to find out approximately weight of one student in 5th standard. So we have taken as 35, okay, 35 approximately weight of one child. Why? Because it could be more or it could be less, but we have taken 35 kg. So 35 approx kg. Now if you see the approximate total weight of 12 students, only 12 students you have to take. So you have to multiply 35, that is the 35 kg of one student multiplied by 12 number of students. So what is the total weight of 12 students? 420 kg. This is the approximately value, because it could be less, it could be more, but we have to take a certain particular weight. Okay, so this is the second answer. This is the second answer for the second question, which is given in your book, page number 3. Now if you see the third question, in the third question they have asked, you have to compare the weight of the 12 students as well as the total amount of mango which is collected from 20 trees. 20 trees. Are you able to understand? See now, this is the third question which is given in your book. See here. Total weight of 12 students, that is 420 kg. Total weight of mangoes from a orchard. From a orchard means from a single orchard. एक आम के बगीचे से कितना इकट्ठा किया है. यहाँ पर मैम ने क्या लिखा है आप देखिए, 216. क्यों लिखा है 216? ऊपर मैम ने समझाया था कि 216 kg एक पेड़ से, एक आम के पेड़ से हम मैंगो इकट्ठा कर रहे हैं. तो 20 ट्री में से कितना हो जाएगा टोटल? तो 216 into 20. Why? 216 is for one tree, the collected mango, and for 20 trees it is going to be 4320 kg. So according to the third question, you have to compare कि कौन सा ज़्यादा है weight, 12 students का या फिर 20 trees से इकट्ठा हुआ mango. तो 12 स्टूडेंट्स का कंपैरेटिवली लेस है, इसीलिए हमने ग्रेटर और स्मॉलर का जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, तो हमने वो यूज़ किया है जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकेंड में, सब में सीखा है. अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताया है कि इफ़ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक and if each kg will cost 75, how many kgs of mangoes will be required for 1 month and what will be the cost of it? ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है पहले. अगर आप समझोगे तो ही हम कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, each kg of mango cost. 1 kg मैंगो का कॉस्ट है ₹75. ईच वीक मैंगो कंज्यूम्ड, मतलब कितना खाया जाता है एक वीक में? 5 kg. ठीक है, तो 5 kg खाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज, दैट इज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 375.
क्योंकि 75 जो है वो 1 kg का दाम है, 1 kg का दाम है 75, तो 5 kg का कितना होगा 375। और ये हम एक वीक में मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, एक वीक में हम इतने रुपए का मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैंगो कंज्यूम फॉर 1 मंथ, एक महीने में आप कितना मैंगो खा रहे हो। अच्छा, एक महीने में नियर बाय 4 वीक्स आते हैं, है ना, और हमने ऊपर ही लिखा है कि 1 वीक में हम कितना खा रहे हैं 5 kg। 1 वीक में हम कितना खा रहे हैं 5 kg, तो 4 वीक्स में मतलब एक महीने में हम कितना खा रहे हैं 5 into 4 दैट इज 20 kg। ठीक है, एक महीने में हम लोग टोटल मिला के 20 kg कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि एक वीक में हम 5 kg कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 वीक में 20 kg। टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगोज इन 1 मंथ, in 1 month madam has written 75 into 20. Why? Because 1 kg of mango is costing how much 75, 1 kg मैंगो का 75 होता है, और आप एक महीने में कितना मैंगो खा रहे हो 20 kg, है ना। तो जब एक महीने में आप 20 kg खा रहे हो और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो इज 75, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना रुपीज़ हम कंज्यूम कितना खरीद रहे हैं ₹1500। तो मतलब एक महीने में आप 1500 के मैंगोज खरीद रहे हो। ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर मैम ने क्या लिखा है, ईच केजी ऑफ मैंगो कॉस्ट ₹75, 1 kg का कॉस्ट 75 है ना, तो फिर 20 kg का कितना होगा 1500। ये बात समझ में आई आप लोगों को। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है वो आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना है, बुक से पढ़िए, और मैडम यहाँ पर आपको समझा रही है। वहाँ पर लिखा है कि अगर आप 3 महीने तक वैसे ही मैंगो खा रहे हो तो कितना केजी कंज्यूम होगा मैंगो का और कितने पैसे लगेंगे। 2 क्वेश्चन पूछा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 3 महीने तक उतना ही मैंगो खरीद रहे हो और कॉस्ट ऑफ द मैंगो उतना ही है, कम भी नहीं हो रहा ज़्यादा भी नहीं हो रहा, ये बुक में लिखा नहीं है, तो यू हैव टू अप्रॉक्सीमेटली सी within 3 months how much mangoes you are going to consume and what will be the cost for 3 months. Now see here, in the last question you see the cost of mangoes in 1 month is equal to ₹1500. So what will be the cost of the mangoes in 3 months? You can see which is written. So 1500 multiplied by 3 will be 4500 cost of the mangoes. So the total cost of mangoes is ₹4500 for 3 months. 3 महीने में आप मैंगो में कितना खर्चा कर रहे हो 4500। ये क्वेश्चन पूछा है। अब दूसरे साइड में आप देखिए मैम ने क्या लिखा है ऊपर, टोटल मैंगोज इन केजी, मतलब आप 3 महीने में कितना मैंगो कंज्यूम कर रहे हो। आपको मैडम ने अभी ऊपर समझाया है कि 1 मंथ में आप 20 kg मैंगो कंज्यूम कर रहे हो, तो 3 मंथ्स में कितना होगा। अगर एक महीने में 20 है तो 3 मंथ्स में यू हैव टू मल्टीप्लाई 20 into 3. So total mangoes consumed in 3 months is equal to 60 kg. ठीक है, यहाँ पर 60 kg for 3 months। तो ये क्वेश्चन जो है 3 भाग में चला है। सबसे पहले आप लोगों को 1 वीक का बताया है। 1 वीक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो 1 वीक का पूछा है, तो 1 वीक के हिसाब से आपने देखो कितना खाया 5 kg, उसका कॉस्ट कितना हुआ 375। फिर उन्होंने कहा कि 1 मंथ में कितना हुआ 20 kg आप खरीदते हो, तो 20 kg का कॉस्ट कितना हुआ 1500, यस। और 3 मंथ्स में आप कितना टोटल वेट ऑफ मैंगो कंज्यूम करते हो 60, क्योंकि 1 मंथ में 20, तो 3 मंथ्स में 60।
And what is the money, total amount of money? एक महीने में 1500, तो 3 months में 4500. Okay. We have just completed the question and answers. Now here, if you read, there is a description of mango orchard. In the mango orchard, what you are going to see? Children are playing to each other. They are using the stone to pick up the mangoes, and there are few birds. Which are they? Yes, cuckoo, parrots. Which are they? So you really enjoy द सीन ऑफ द मैंगो ऑर्किड. मतलब जब आप बागीचे में जाते हो आपको बहुत मज़ा आता है मैंगो तोड़ने में, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ सुनने में. ये सब बच्चे कहाँ करते हैं? वेयर दे डू? इन द मैंगो ऑर्किड विच you can see in your nearby village. Okay, so this is a story which is already started in this chapter. From where? From the small flower of the mango, more, which we have earlier we have discussed. And now the mango are growing, so the children are there, and afterwards what will be there? Now picking of the mangoes and segregation, everything is going to be there. Now you can see there are different mangoes which are pictures are there. So this is your homework. You have to draw different mangoes with the picture, with the leaves. You can see. So you have to draw like that. Okay. Now there are few things which are discussed on the next page. Turn the page in which it has been told that the India produces 1 crore 60 lakh tons. You can see India produces mangoes in a year 1 crore 60 lakh tons, which is nearby value. And how much? 1 ton is equal to 1000 kg. 1 ton is equal to 1000 kg. So you can find out, you can multiply by 1000, so it is going to be a big amount if you convert this value into kg. Now India is the biggest producer of the mangoes in the world. In the world, India is the biggest producer of mangoes. Now in India, which is the state which is producing more amount of largest production of mangoes? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the largest production of mangoes in India. So these are some general knowledge type of question which are asked and which is given inside your notebook. Now there is a description. If you see here, there is a picture. Yes, you can see this is the biggest mango which is found in Philippines. You can so the biggest mango, you can see the picture, and it is found in Philippines. Now what is the weight of this mango? This is 3.435 kg, which is found in Philippines. And here they have written you can see here they have given the description of the mango, that is how much is the circumference. You can see the length 30.43 centimeter in length, then 19.5 inches in circumference, and 17.78 inches in breadth. So this much huge mango you can see which is found in Philippines. So these are the some general knowledge questions which are given, a description which is given in your book. Now come to below, you can see there are some. You can see Jency, she has drawn some mangoes in different shapes. Here the mangoes are there, and on the upper part of that she has drawn a triangle. Here also you can see 2 mangoes are there, and a big circle she has made. Like this you can see this. This is an oval. Inside the oval 2 mangoes are drawn. This is a square in which mango is drawn by Jency. So this is a homework which you have to also perform how Jency has done. You have to draw mangoes in different shapes. Okay. In the next page you can see there are in this page you can see different type of mangoes like Hafuz, Langdo, Totapuri, Dasheri, Badam. They are drawn in the different shapes. Like that
you can draw different shapes of mangoes and different shapes of geometrical shapes. You can first cut the picture of mangoes and paste it and then draw different shapes. Okay, now if you go below mango orchard and its farmer, now we are little bit describing how the farmer they take care of their mango orchard. Now we will see. Here they have given the description of the mango orchard, where you can see a picture of a cuckoo. So you can see different birds and how the farmer they take care of their trees which are planted inside the mango orchard. Even the farmers nowadays they are grafting. Grafting means छोटे छोटे कलम किए हुए मैंगो ट्रीज लगाते हैं. वो बीज भी लगाते हैं, मैंगो के बीज भी लगाते हैं, लेकिन वो ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज भी लगाते हैं क्योंकि वो 3-4 साल में ही उनमें फल आ जाते हैं. सो फार्मर्स आर नाउ गोइंग फॉर मोर मैंगो ट्री विच आर ग्राफ्टेड इंस्टेड ऑफ सोइंग द सीड. मतलब वो सो कम कर रहे हैं लेकिन वो ग्राफ्टेड ट्रीज ज़्यादा लगा रहे हैं. अब जब मैंगो ट्रीज़ में से मैंगो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है. आप देख रहे हो यहाँ पर बुलक कार्ट व्हाट दे आर डूइंग हियर. ऑल द मैंगोज दे आर लोडेड. जो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन. इफ़ यू सी हियर देयर इज़ अ क्वेश्चन दे हैव रिटन. A bullock cart can cover a distance of only 4 किलोमीटर in an hour. अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकता है, then the next question they have written, how much time will it take to cover the distance of 10 किलोमीटर. तो कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर कवर करने में. Here it is written distance covered by bullock cart in 1 hour which is equal to 4. You can see 4 kilometer. So bullock cart take how much time? For 1 hour it can cover 4 kilometer. What is written in the textbook? Find out the time to cover the distance. What is the distance here? 10 kilometer. So you have to find out the time. So in 1 hour if it is taking 4 kilometer, what will be the time for the 10 kilometer? So divide 4 by 10. Your answer is 2.5 hour. So what will be the time to cover the distance for 10 kilometer is 2.5 hour. So here we have seen when any mangoes from the mango orchard, it has been loaded by a bullock cart or a truck. To reach there, certain amount of time is needed. Manpower or the animal power has been used. Just after that, in this we are going to discuss about the agriculture production marketing committee, which we are going to discuss in our next class. Okay.